Good evening, students. Welcome to Next Generation Smart Classes. I'm Dr. Alok Sharma. Would be taking the science lecture on the most simplest method to balance a chemical equations. Students, last class में हमने जो method balance करने का chemical equation को पढ़ा था, that method was according to the NCERT, जिसमें हम एक टेबल बनाते हैं और 3 या 4 कॉलम बनाने के बाद हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स के नाम लिख के उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज होती हैं उनको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. So today I'll tell you another method, and this method is a very simple method to balance a chemical equation. Any equation you can balance using this method. और इस method की एक खास बात ये है कि ये maths को chemistry के साथ link करता है. So not wasting time, let's start this method. तो सबसे पहले मैं वो equation लिख देता हूँ जो NCERT में method से solve की गई थी. Let me write that equation first. So the equation is 3Fe plus 4H2O gives us Fe3O4 plus 4H2. ओके, सो ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन मैंने इसलिए लिखी है कि हम लोग चेक कर सकें कि जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो मेथड सही है, क्या हमारी इक्वेशन सही आ रही है. देखिए, इस मेथड में यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स एंड दीज 3 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी भी स्टेप में गलती करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. सो प्लीज फोकस व्हाइल आई एम राइटिंग दीज स्टेप्स. लेट्स स्टार्ट. स्टेप नंबर 1. In the step number 1, you have to write simply the skeleton equation. Skeleton equation जहाँ तक आप जानते हैं कि उसे unbalanced equation भी बोला जाता है. सबसे पहले हम लिखेंगे the unbalanced scale equation. Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2. Okay. Next, what we have to do? Step number 2. Simple. And please make sure कि आप ये स्टेप गलत ना करें. इस स्टेप की गलती की वजह से ही आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे. आपने क्या करना है स्टेप 2 में कि जितने भी यहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स लिखे हैं उनके सामने एक एक कोफिशिएंट को लिख देना है और वो कोफिशिएंट्स को डेजिग्नेट किया जाएगा स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी से. कैसे सर? लाइक दिस. फर्स्ट ए बी सी एंड डी. ओके, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इनके नीचे. तो ये 4 कोफिशिएंट्स हमने ले लिए. तो अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कि हम क्या करेंगे, जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. प्लीज ध्यान से सुनिए, हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में. ठीक है ना? कैसे? लेट्स सी. फॉर एग्जांपल, फॉर आयरन I can say simple Fe. So number of atoms of iron on left hand side is 1. So we multiply A with 1. Simple. ध्यान से देखिएगा. Next step. On the right hand side अगर आप देखेंगे तो आयरन के 3 atoms हैं, तो हम इस 3 को multiply करेंगे C के साथ, तो it would be like 3 into C. So further classifying this equation comes out to be A is equal to 3C. Mark this as small 1. I guess this point is clear. Instead, in the number 2 point, what we'll do, we will do the same method for all the other atoms also. So the next atom which we need to go for, that is iron, that is hydrogen. So for hydrogen, so on the left hand side we have 2 hydrogen atoms, so we multiply 2 with B, so we get 2 into B, which is equal to, on the right hand side अगर आप देखें तो you have only 2 atoms of hydrogen and the coefficient of that is D, so that comes out to be D into 2. So that is equal to 2B is equal to 2D. So 2 and 2 gets cancelled. So the equation we get it is B is equal to D. Mark it as 2. Similarly, for oxygen, the last one which is left. Please answer again. On the left hand side, oxygen only 1 atom. So 1 atom of oxygen gets multiplied with B. So we get B into 1. And on the right hand side, we have 4 oxygen atoms. And this 4 would be multiplied with C. So that is equal to C into 4. So we get another equation, that is B is equal to 4C. Mark this as 3. So
आप समझ गए मैंने क्या किया? सो यहाँ पर हमने ये चीज़ की है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी एटम्स हैं और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट किया है हमने। अब सर नेक्स्ट क्या चीज़ आने वाली है? अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 इज दैट इन स्टेप 3 व्हाट यू हैव टू डू, आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो सबसे बड़ा है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए आपको कौन सा लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है कि राइट हैंड साइड में? Correct. Right hand side में सबसे बड़ा molecule है, that is Fe3O4. So in the next step you have to do, take the coefficient of largest molecule as 1. Please remember this. ठीक है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है लार्जेस्ट मॉलिक्यूल का जो कि Fe3O4 है, दैट इज C. सो व्हाट विल दे, C इज इक्वल टू 1. अब ये C की वैल्यू आ गई है, अब C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे एंड देन विल गेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A एंड B आल्सो. ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C in equation number 1 we get A is equal to 3 into 1, that comes out to be A is equal to 3. Okay, similarly when we talk about B is equal to 4 into 1, that comes out to be 4. Next we also know that B is equal to D, hence the value of D is equal to 4. So we have 4 values, C, we have A, then we have B also, and finally you have D. And the last step, final step, step 4, put these values in the equation. In the equation, and that equation is written in step 1. I think you're getting what I'm saying. Okay, so finally we'll put the values of this equation in equation number 1. So we'll get it, the value first. In place of A we write it 3, so 3 Fe plus, in the place of B we write 4. Okay, 4 H2O. Correct. Next, in place of C it's 1, so no need to write again and again, don't need to write this again and again. So next steps, just hold a second. So after that, carrying on further, so it is Fe3O4, and finally the value of D is 4, so we write 4H2. Bingo. Now you can see this, that the equation which we have balanced using this step is similar to the equation which we have written and we have balanced with the NCERT equation. So that was simpler. So again, I'm just giving a summary of this method. In the first step, you need to write the skeleton equation. After writing the skeleton equation, you need to give the coefficients of all the products and the reactants. In the step 2, then you have to calculate the value of each coefficient of each element on both the sides, like we have done for A, for B, for C and D. Step 3, you need to take the coefficient of the largest molecule as 1, and then by pulling the value of that coefficient at 1, you need to calculate the coefficient values of different other ones. So in this we get C is equal to 1, A is equal to 3, B is equal to 4, and D is equal to 4. And the last equation, the last step, I'm sorry, in the last step you need to just put these values of these coefficient in the step number 1 and it'll get the balance equation. So this simple method. I hope you understand this. For further details, kindly contact the next generation classes and we'll go through this very easily. Thank you so much. Alok Sharma signing off.